Now we are coming to a political philosophy. I think this is the first word of our syllabus, first topic. What is constitutionalism? Ism is a philosophy. Wherever we put ism, it becomes a philosophy, isn't it? So that means it is a constitutional philosophy. और वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? जिस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया है, किसके लिए किया गया है? To give us a governance, the type of governance we want, the way we want to be governed, the way we constitute our nation. So, whosoever is coming to power by way of becoming elected representatives, हम elect करके भेजते MPs, MLAs को, वही तो हमें govern करते ना, they only make the laws. So, all and the other organs of the governance, that means all the three organs, legislature, executive, judiciary, must act according to the provisions of the constitution. भाई जिसने आपको पावर दिया आप उससे बाहर नहीं जाएंगे. That also establishes what? Rule of law. Follow the law. And which law? The supreme law of the land. That is constitutionalism. और कुछ नहीं है. That means what? Everybody, every authority is bound by the provisions of law, constitution. एक तरह से क्या हो गया? Certain limitations are put on every organ, isn't it? भाई आप इससे ज्यादा नहीं करेंगे. आपकी पावर इतनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना दिया हुआ है, आपने उसके अंदर अंदर काम करना है. And that is what? Putting a limitation on the governance. And that is why constitutionalism is also sometimes referred to as limited governance. Limited by what? Limited by the provisions of the constitution. भाई जो उसमें दिया उससे बाहर नहीं जाना. ये सिर्फ सरकार या ऑर्गन्स के ऊपर ही लगता, ये हम सिटीजन्स पे भी लगता है. मैंने क्या बताया था? लॉ क्रिएट्स व्हाट? बताइए. अब ये जो है ना, ये दोनों वर्ड अगले 5-6 महीने आपको मेरे से रोज सुनने होंगे. राइट्स, ड्यूटीज, बिकॉज आई विल कनेक्ट एवरीथिंग टू दीज टू. सो व्हेन वी टॉक ऑफ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की क्या क्या ड्यूटी है बताइए. चलिए. स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? टू प्रोवाइड नेशनल सिक्योरिटी, isn't it? Then they have a social framework which is welfare oriented. अब ये एक ऐसी नई टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं which is also referred to as what? Welfare state. And what is opposite to that? Police state. What we had during British time? It was police state. Why British had come to India? What was their purpose? To rule us, to exploit us. They had no other connection with India. ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कमर्शियल इंटरेस्ट से पॉलिटिकल इंटरेस्ट बन गया, ग्रेटर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ यहां से. सो वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहेंगे अरे उन्होंने रेलवे बनाया, उन्होंने कम्युनिकेशन बनाए, उन्होंने ये किया वो किया. पीपल आर्ग्यू लाइक दैट, इजंट इट? बट दैट वाज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट वाज फॉर देयर ओन कन्वीनियंस. अगर उनको माल ले जाना है यहां से तो बॉम्बे तक उनको अच्छा रोड चाहिए, ट्रेन चाहिए. यही तो था उनका काम. रॉ मटेरियल ले जाओ, वहां से बना के वापस भेजो. दोनों तरफ से एक्सप्लॉयटेशन हो गया.
यहाँ की इंडस्ट्री मरती गई, वो इंडस्ट्रियलाइज थे, दे कुड मेक बेटर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, दे कुड मेक बेटर। तो पहले हमारा रॉ मटेरियल सस्ते में ले जाओ, फिर अपनी चीजें महंगे में बेच दो, तो एक्सप्लॉयटेशन दोनों तरफ से हो गया। उसके लिए दे वांटेड, एंड देन व्हेन यू हैव टू गवर्न यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए बड़े बड़े कलेक्टर्स बिल्डिंग बनी, कलेक्टर का घर देखो कितना बड़ा होता है। आपने देखा होगा जो पुराने कलेक्ट्रेट है, आई वॉज कलेक्टर मदुरई, कैन यू इमेजिन मेरा घर कितने एकड़ में होगा? 18 एकर्स में बंगला जो था, कलेक्टर का बंगला, ओल्ड ब्रिटिश बिल्डिंग। एंड इवन एज SDM फर्स्ट पोस्टिंग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पोलाची इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, 5 एकड़ में तो मेरा बंगला था उसमें, और वो भी ब्रिटिश बिल्डिंग। In fact, Pandit Nehru had stayed there one night in 1964. It was such a beautiful building. तो वो ये बिल्डिंगें बनाते थे, वो जो रोड्स बनाते थे, वो रेलवे का जो सेटअप बनाया उन्होंने, हमारी भलाई के लिए नहीं किया। वो तो होती गई साथ में, ठीक है, वी आल्सो यूज दैट, बट इट वाज अल्टीमेटली फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। सो इट वाज नॉट ए वेलफेयर स्टेट, दे रूल्ड अस with a ruler through, repression and through the police. ठीक है, तो that was the concept of police state. But after independence, who are the rulers? The people. When people are the rulers, they have to think of their own welfare first. And in their welfare lies the welfare of the entire state. और वो किससे होती है? Through that governance, that philosophy of governance as a welfare state. इसीलिए there are duties on the state, and where are they written? In the Constitution. Directive principles of state policy, that you run the government, you manage, you govern the state according to these principles. Right? Ensure socialist, no concentration of wealth in few hands, 39B(c). Right? Equitable distribution of resources. These are all the duties on the state. Have clean environment, अब environment भी आ गया 48A. So there are duties on the state which are in part 4. Right? Then it is not that only state has duties. We as citizens also have duties. Where are they? Part 4. 4A fundamental duties. They are for citizens. They were not there in the original Constitution. Which amendment? 42nd Amendment. So there are duties on us also. So I am just talking about this part. When there are duties written clearly laid down in the Constitution, 4 and 4A, don't you think it gives a positive signal, a positive direction as to how to govern the state? Welfare state. And that is called positive constitutionalism. Right? Look at the other part. Now, we also have certain rights. We as citizens, and in some cases, even the non-citizens also. उसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ अभी, in just next 2-3 minutes, जो आपको बहुत काम आएगा. I tell you, it is something unique. You will understand that. You will yourself realize कि जो rights हैं, ये 2 तरह के हैं.
आप कहेंगे हाँ फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, विच आर एनफोर्सेबल, विच आर अवेलेबल टू अस, अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द स्टेट. अगर कोई फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है तो हम जाते हैं कहां पे? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर 226, राइट? फॉर एनफोर्सिंग दोज राइट्स कि मेरा फंडामेंटल राइट, मुझे अरेस्ट कर लिया इलीगली, आई गो टू आइदर सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड प्रे फॉर व्हाट? विच पिटिशन? habeas corpus, to have a body, produce a body. And who will have to produce that body? Against whom that writ is issued by the Supreme Court or the High Court? State. It is the duty of the state. Right? So, rights are with us and they are to be enforced against the state. That means state has to ensure these rights to us, isn't it? State, and if they don't ensure rights are violated, they will be enforced by the judiciary by issue of writs or any other appropriate order. ठीक है? तो rights are in the form of what? Negative कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. वो पॉजिटिव था, आपने ये करना है, वो पॉजिटिव हो गया. आपने ये नहीं करना है, नेगेटिव हो गया. बस इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेगेटिव. आपको देख के तो बड़ा डर लगेगा, पर इज इट नाउ क्लियर? कुछ भी नहीं है उसमें. आप राइट्स को एक तरफ डाल दो, ड्यूटीज एक तरफ डाल दो. स्टेट हैज टू एंश्योर ऑल दीज थिंग्स प्लस अदर्स. And then if they have to, these are the duties, this is how they have to run the governance of the country, positive side पे. ऐसे चलाना है आपको स्टेट को, और ऐसे ही नहीं करना है. जब नहीं करना है तो फिर नेगेटिव आ गया. These are not enforceable. You can't go to a court and say कि नहीं भाई ये इन्होंने ऐसा नहीं किया. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना स्टेट की जिम्मेवारी है. अब मुझे नहीं मिला, मैं कोर्ट चला गया. गिव ए डायरेक्शन, इशू ए रिट ऑफ मैंडामस टू द स्टेट कि आप ये करिए, इनको पानी दीजिए. नो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल. दे आर ड्यूटीज ऑफ द स्टेट विच दे हैव टू परफॉर्म. एंड इफ दे फेल टू परफॉर्म, व्हाट विल यू डू? वोट नहीं दोगे भाई, हटा दोगे उनको. बट कोर्ट नहीं कहेगा कि आप करो. हाँ, इफ देयर इज ए पब्लिक ड्यूटी अंडर एनी लॉ एंड दे हैव फेल्ड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, इन दैट केस यस, रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड. दे हैव ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, टू प्रोटेक्ट योर लिबर्टी. बट इफ दे फेल टू डू सो, the court judiciary has the right, they can issue a writ of habeas corpus against the state. Right? मेरा एक ये कुछ कह लीजिए स्टाइल है कि I'll explain to you the concepts in detail in plain simple language first and then take you to the slides. फिर वो थोड़ा जल्दी हो जाता है. अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा यहीं से. देखिएगा, द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यही तो पढ़ा है अभी. देन इट इज द ट्रस्ट, बिलीफ एंड फेथ दैट पावर विल नॉट बी मिसयूज्ड. दैट मीन्स इट इज पुटिंग व्हाट? चेक्स एंड बैलेंसेस. एंड दैट चेक्स एंड बैलेंसेस इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस, पुटिंग लिमिटेशंस. इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी के दायरे में आप काम करेंगे. इट फेवर्स रूल ऑफ लॉ रादर देन रूल ऑफ मैन एंड लीडिंग टू व्हाट? लिमिटेशन ऑन गवर्नेंस.